Okay, so let's start today's topic. I'm sharing my screen. Let me know whether it is visible to you. Okay, let's start with. Now we covered till the topic email, right? What does it mean? How the procedure? What are the procedures involving to send a mail electronically from one end or from the sender to the receiver? What are the procedures? What are the protocols? What are the protocols used in uh, using the email services? So after that, just we have to know what are the physical connections, how the physical connections between the nodes or between the computers, different computers, or from from computer to all the peripheral devices, or there are some other devices also needed when you connect your device to avail the services of internet, which may be provided by the ISP, that is your internet service provider. So to connect all those devices, we'll study both, like the cables and also the devices. So there are so many topics we have to cover today. So be attentive and please be with one notebook and a pen. So one of them is Ethernet cable. Now, Ethernet cable allows the user to connect their devices, various devices like computer or mobile or routers, to a network that will allow a user to access internet. Now, there are various types of these Ethernet cables. So sometimes they ask in the examination about these cables, maybe in match the following, or they'll give some like details of a particular cable, and they'll ask they come under which type of cable. So there are so many types of Ethernet cable. Now, one is coaxial cable. Coaxial, the name suggests there is a axis and there are two or three two cables, different cables. They are insulated by a insulator, and coaxial means the axis is same, the center is same. They are circularly placed around this axis or around the center. So this is used to carry the high frequency electrical signal with low losses, very less losses, because in general copper wires there are a thin insulation, so the losses are very high. Some heat loss, some noises may come from the atmosphere or from the other sources, or other you can say electrical appliances if there are any around it. So uh, so losses should be very less when you transfer electronic signal, because their intensity and their magnitude is less, because it covers maybe a short distance or maybe a large distance. So it has a copper conductor in the middle that is surrounded by a dielectric insulator, usually made of PVC or Teflon. So dielectric insulator is surrounded by a braided conducting metallic shield, like here you can see. This is the copper mesh. So, and this is the copper wire, the first wire, then insulation, and then copper mesh, and then outside insulation. So likewise, it is this PVC is made, and this reduces the electromagnetic interference from the from the metal and from the other electromagnetic fields which are surrounding, or you can say in the place where this cable is working, or it is connecting the various devices, or right outside interference, you can say. So this shield actually protects from such unwanted interferences. So maximum transmission speed is 10 Mbps, and generally it is used in telephone systems or in cables.
which you have seen in your home if you have this DTH connections, cable connections. The other one are twisted pair. They are twisted, various cables together in a one jacket, and they are twisted means they are in pairs and they are twisted. So all these copper cables in which the two insulated copper wires, they are twisted around. Each wire is insulated by by some PVC coating or a shield, and then they are twisted individually. So that if this individual insulation is must to reduce the interference or the crosstalk between the two. So not much detail is required, but you should know yes, these are the cables which we are using for the interconnection of various devices. Now then there is a fiber optic cable. Fiber optic cable in which they are not carrying the electrical signals, but electrical signals in the form of light. So in the form of laser, you can say. So fiber optic cables used, they are made of glass, a very fine. They are like as thin as your hair. So these cables are, they are made of glass cores, and they are surrounded by several layers of cladding material, which is usually made of Teflon or PVC, and it transmits data in the form of light signals, due to which there are no interference issues. And that means the interference or the losses in OFC, which we call fiber optic cable, are very, very less. Speed is very, very high. And also the data handling capacity of these fiber optic cables are very, very high. They can travel, a long distance as compared to twisted cable and coaxial cable. And not much detail is required. That much is enough for you. Now networking devices, they are also some questions they may ask from this topic, because sometimes I have seen in some papers they ask questions about networking devices. Now what are the networking devices? So one of them is bridge, second is hub, third is switch. Now what is bridge? अच्छा, इसको हिंदी में भी मैं बता देती हूँ आपको कि जो ईथरनेट केबल है ये बेसिकली एक डिवाइस से, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को, या कभी आपको अपने मोबाइल को कनेक्ट करना हो किसी और पेरिफेरल डिवाइसेस से, या आप कुछ प्रिंट लेना चाहते हो, या कुछ ऑडियो सुनना चाहते हो, या वीडियो देखना चाहते हो, तो आपको कोई केबल्स की ज़रूरत जो है वो पड़ती है। तो इस जो ये केबल कनेक्शन, जो फिजिकल कनेक्शन होते हैं डिवाइसेस के, वो इथरनेट केबल से होते हैं। और उसमें जो पहला नाम है वो है कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल में क्या होता है कि एक जैसे केबल है, एक वायर है जो सिग्नल को कैरी करता है, उसके चारों ओर एक इंसुलेशन है और उसके ऊपर फिर से एक केबल है। केबल मतलब कि एक तरह से कॉपर वायर्स का मैशिंग होती है। मैश टाइप मतलब एक जाल जैसा बना हुआ होता है, क्योंकि बहुत सारे सिग्नल्स जो है उसको कैरी करना है, तो बहुत सारे वायर्स का एक मैश होता है। तो इन दोनों जो कंडक्टर्स हैं, जो एक आपका कॉपर वायर मिडिल में है, मेन जो सेंटर में है, और उसके चारों ओर इंसुलेशन और फिर एक मैश, क्योंकि दोनों जो वायर हैं वो अलग अलग सिग्नल्स को कैरी करते हैं, और मिक्सअप ना हो जाए उनमें जो है एक तरह से इंटरेक्शन या इंटरफेरेंस ना हो जाए, आपस में सिग्नल्स जो हैं वो लॉस ना हो जाए, इसलिए एक इंसुलेशन जो है बीच में डाला जाता है। और उसके ऊपर जो है एक पूरे ही केबल के लिए एक इंसुलेशन जो है, जिसको कि आउटसाइड इंसुलेशन कहते हैं, वो होता है। तो इसके अंदर जो सेंटर पॉइंट है वो एक है, और उसके चारों ओर आपका जो है कंडक्टर है, इसलिए इसको बोलते हैं कोएक्सियल केबल। इसकी जो स्पीड होती है वो होती है 10 Mbps। दूसरा है ट्विस्टेड केबल। ट्विस्टेड मतलब दो बहुत सारे वायर्स हैं जो कि पेयर में है, तो दो वायर को ट्विस्ट कर दिया जाता है ताकि वो जगह को कम घेरें, लेकिन सारे ही वायर जो हैं वो इंसुलेटेड होते हैं। उनको इंडिविजुअली पेयर्स में ट्विस्ट करके और फिर उनका एक इंसुलेशन करते हैं,
और उस पूरे को फिर एक ब्रेडेड फोल्ड शीट में, एक मतलब उसी तरह जाली की तरह होता है इंसुलेटर मटेरियल, उसको उससे कवर करते हैं और उसके बाद में इस पूरे फाइनल जो है एक जैकेट टाइप उसको पहना देते हैं, एक पूरा इंसुलेशन का एक कोट जो है उसके ऊपर लगा देते हैं। तो इस तरह से इसको ट्विस्टेड पेयर बोलते हैं क्योंकि दो वायर ट्विस्टेड हैं। फिर एक होता है फाइबर ऑप्टिक केबल। फाइबर ऑप्टिक केबल जो है वो, ऑप्टिक का मतलब होता है लाइट, तो लाइट्स के फॉर्म में यहाँ दोनों जो हमने पहले पढ़े उसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स डायरेक्ट जा रहे हैं, है ना। और फाइबर ऑप्टिक में जो सिग्नल है उसको लाइट में कन्वर्ट करके फिर लाइट के थ्रू उसको भेजते हैं। तो लाइट किस में ट्रेवल करेगा, ग्लास में ट्रेवल करेगा। तो ये सारी जो केबल्स हैं बहुत ही बारीक और महीन ग्लास की वायर्स होते हैं ये, और उनको फिर इंसुलेट करके और उसके बाद में एक केबल, बहुत सारे वायर्स को फिर एक केबल में जो है वो डाला जाता है, और उसमें भी जो है इंसुलेशन जरूरी होते हैं। अब क्योंकि लाइट के फॉर्म में ट्रेवल कर रहा है और एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रेवल कर रहा है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी स्पीड और इसकी स्पीड में बहुत बहुत फर्क है। जो लाइट की स्पीड है वो आपको पता है कि कितनी हाई होती है, कितनी होती है लाइट की स्पीड, एनीवन नोस स्पीड ऑफ लाइट? चलो ये आपका होमवर्क है, ये हम 12th 10th या उससे भी पहले पढ़ लेते हैं। तो ये आप याद करके आना, ठीक है। इट्स अ होमवर्क फॉर यू टू यू नो द स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ सिग्नल। ये थोड़ा आप मतलब रिफ्रेश करके आना अपने आप को। तो ये बहुत ज्यादा होती है, मैं क्या इतना बता सकती हूँ आपको। तो मतलब कि स्पीड ऑफ लाइट इतनी ज्यादा है कि होती है कि आप सोचो कि सन कितना बिलियंस ऑफ माइल्स या इतना दूर है, और उसकी जो रेज हैं वो 8 मिनट में हम तक पहुंच जाती हैं। और साउंड जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जाने में बहुत टाइम लगाता है। अब क्या क्या स्पीड है वो आप इसको रिफ्रेश करके आना। तो स्पीड ऑफ लाइट से मतलब ट्रैवल करता है आपका सिग्नल। तो इसकी स्पीड ज्यादा होती है, स्पीड ज्यादा है तो आपका डेटा हैंडलिंग कैपेसिटी जो है इसकी ऑप्टिकल फाइबर की वो ज्यादा होती है, और इसमें लॉसेस जो है वो बहुत बहुत कम होते हैं। तो इसलिए ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। आजकल हर जगह काम भी हो रहा है ओएफसी इंस्टॉलेशन का, जो है घर घर तक पहुंचने के लिए। तो ये चीज आपको जो है वो ध्यान रखनी है। तो इस तरह से उसके बाद आते हैं हम नेटवर्किंग डिवाइसेस पे। Now, networking devices are, some devices apart from your computer, apart from your destination or a receiver, sender computers or a nodes. There are so many other devices which are required to transfer the data from one end to another. Now, what are those devices? So let's look at. First is bridge. Now, this is a device that can forward information and it's supported by physical address, which is called a bridge. So in technical terms, packets, your information is in the form of some analog version. Now then it is converted into digital version that we have seen, right? Analog to digital conversion. Some translators are also there. And then this information is again segregated or, divided into some packets. All right. All the information is not transferred at one go. They are divided into some packets, and according to as per the availability, these packets are filtered and then transferred to some physical layer, and then through some radiations, some microwave radiations or any other radiations. So this packets are filtered by some form of a device which we call bridge. As we know, bridge is just to connect one end to the other end. We all know what we call bridge. So that is the same meaning here, the device that can forward information and is it is like filtered and then forwarded by to some other device. Now this filtering means
there are so many IP addresses. There are, because internet or any networking is something which is in which the so many devices are connected, but your data is concerned to a particular device. So that filtering of address or IP address more correctly is done by bridge. Now then there is hub. Hub is, as we know, it is a connecting device of so many entities, you can say. So a network segment is formed by attaching a network cable to a connecting device, and then this hub, generally it doesn't filter any information, but it just you can say pass the signal, incoming information frames or packets to any or all the elements. Nowadays, the central switch or the hub is used by all the networks to which the computers are connected. So the bridge, which detects the IP address, and it channelize or direct the data to a particular device. But hub is just a connecting device in through which all the various systems or you can say computers are connected. Now then there is a switch. Switch is designed in such a way that it can boost its productivity. It is designed with a buffer, and you can say it's a multi-port bridge device. Switch means there are, in a switchboard there are various switches, and you have to select which switch is meant for which function. Like for light you have a different switch, for lamp you have a different switch, for fan you have a different switch. So like that. So it has a multi-port bridge device, you can say. तो ब्रिज जो है वो क्या करता है कि आपका जो इंफॉर्मेशन है वो उस इंफॉर्मेशन में आप कुछ एड्रेस डालते हो ना, आपने यूआरएल और ये सब हमने पढ़ा, तो उसमें एक एड्रेस डालते हो। तो ब्रिज क्या करता है, ब्रिज जो है डिवाइसेस के बीच में कनेक्टेड है, लेकिन आपका जो डेटा है वो किस डिवाइस तक पहुंचना चाहिए उस एड्रेस को फिल्टर आउट करता है। तो ये बताता है कि हाँ ये इसके लिए नहीं है, इस पर्टिकुलर डिवाइस के लिए। और हब भी जो है वो एक कनेक्टिंग डिवाइस ही है, लेकिन ये कोई एड्रेस को फिल्टर आउट नहीं करता। जस्ट एक हब मतलब कि एक ऐसा सेंट्रल डिवाइस है ये जिससे बहुत सारे कंप्यूटर्स जो है कनेक्टेड हैं। तो ब्रिज ने उसको फिल्टर किया और हब ने उसको उस डिवाइस तक सीधा पहुंचा दिया, मतलब कि इंटरकनेक्शन है। स्विच में क्या होता है कि मल्टी पोर्ट ब्रिज डिवाइस है, इसमें बहुत सारे पोर्ट यदि कनेक्टेड हैं, बहुत सारे सिस्टम्स कनेक्टेड हैं, तो उसमें एक स्विच भी लगाया जाता है। तो स्विच क्या करता है कि एक तरह से जैसे कि आपके इलेक्ट्रिकल पैनल्स हैं आपके घरों में, तो उसमें बहुत सारे स्विचेस होते हैं। जिस फंक्शन के लिए आपको चाहिए आप वो वाला स्विच ओपन करते हो या क्लोज करते हो। उसी तरह से इसमें बहुत सारे एक तरह से ब्रिजेस हैं जो कि ये बताता है कि भाई आपको कहाँ पे स्विच करना है, किस डिवाइस से किस डिवाइस तक आपको कनेक्शन करना है। तो दैट मीन्स इट बूस्ट द प्रोडक्टिविटी। ये एक तरह से आपके सिग्नल को या एफिशिएंट बनाता है आपके नेटवर्क को। फिर आता है राउटर। राउटर का मतलब है रूट बताना कि कहाँ से किस तरह से जो है आपका जो डेटा ट्रांसफर है वो होगा। So how the data can be forwarded and filtered, it all based on the address and by using connective devices which we call router. Now IP addresses would be used in case of TCP/IP network, and they play a major role in because TCP/IP network is a universally used network for in the field of internet, and this has a particular protocol. So particular you can say routing protocol, where your because there are billions of systems which are connected to the internet through the various ways, but using the same protocol. So your system has a unique IP address. So through this address, they locate your, the destination point, and they follow a certain protocol, which we'll study after that.
And these routers, they help the internet to become, to route or to channel the data from one end to another end. And they control the traffic and keep the network productive, because there are so many systems, so many users are connected to this internet at one time. And then there is a modem, which is placed at your end. So it is an additional attention grabbing network devices. So a modern works as a modulator and demodulator, two functions done by a same device. It modulates and demodulates the signal, because you have started with analog signal, and then it is converted to digital for the functioning of your system, so that your CPU can work on it. And then this information is converted into analog, for the transmission, or for the display devices, or for whatever form you want. And at the same time, this should be converted again into digital information to again work, because at the receiving end again there is a computer. So it understands only the digital form of digital version of the data. So again it is converted into digital form, and then but you don't understand the digital form. Again it is converted into analog form. So analog to digital conversion and digital to analog conversion is done. Analog to digital is called modulation. Digital to analog is called demodulation. So there is a device, to communicate your system with an, you can say, internet or the further processing protocols. We need this model. Then there are repeaters. Now, इसको हिंदी में भी बता देते हैं, ये मैंने बता दिया था. हाँ, राउटर्स और मॉडेम. राउटर क्या करेगा कि आपके सिग्नल को रूट देता है, एक चैनल देता है, आपके आईपी एड्रेस जो भी है, कि आपका जो डेटा है वो कहाँ तक जाना चाहिए, कौन सा एंड पॉइंट है. क्योंकि इंटरनेट जो है वो एक खुला आकाश है ना. उसमें बहुत सारे सिस्टम्स, बहुत सारे डेटा है, बहुत उसको सर्वर इतना बड़ा है, और हर मतलब जगह जगह पे ये सर्वर्स हैं अपनी अपनी कंपनीज के. जिस भी सर्विस प्रोवाइडर से आपने लिया है उसके बड़े सर्वर पे वो डेटा जाता है, वहां से फिर और आगे जाता है. तो इतना ज्यादा ट्रैवल करता है, तो उसको रूट कौन करेगा, उसके लिए एक पर्टिकुलर डिवाइस है, राउटर. तो आईपी एड्रेस के अकॉर्डिंग जो है टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल को यूज करके, और फिर वो आपका जो है सिग्नल को, आपकी डेटा को फॉरवर्ड करता है, फिल्टर करता है ना, और कंट्रोल भी करता है ट्रैफिक को, कि यहाँ अवेलेबल नहीं है तो दूसरी जगह से वो आप फैसिलिटी लेके और आपका सिग्नल को वो आगे भेजेगा. मॉडेम जो है मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर का शॉर्ट वर्जन है. मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन होता है एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करना मॉड्यूलेशन है, डिजिटल को एनालॉग में करना डीमॉड्यूलेशन है. क्यों जरूरत पड़ती है? क्योंकि आपको जो इन्फॉर्मेशन आप देते हो कंप्यूटर को वो एनालॉग फॉर्म में है, आपको लेना भी किस फॉर्म में है, एनालॉग फॉर्म में, क्योंकि डिजिटल वर्जन आप समझ नहीं सकते और एनालॉग वर्जन आपका कंप्यूटर नहीं समझता है. तो एनालॉग डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग, वही चीज जो है आगे ट्रांसमिशन के लिए भी जरूरी है. एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करना और डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट करना, वापस जब डेस्टिनेशन पॉइंट में आ जाता है तो इसीलिए ये वाला डिवाइस जो है वो हम यूज करते हैं. रिपीटर्स क्यों यूज करते हैं? जब आपका जो डेटा है वो लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है, तो इसलिए बीच बीच में एक डिवाइस लगाते हैं जिसे रिपीटर कहते हैं. वो जो लो डाउन हो गया है, जिसकी स्ट्रेंथ कम हो गई है सिग्नल को, उसको वापस एम्पलीफाई करता है और फिर वो एक तरह से उसको ट्रांसफर करता है. Or in other words, a device that on receiving the signal, it amplifies because the strength or the magnitude of the signal will get weakens as it travels long distance. So that's why repeaters are placed in between. So in other words, it can be said that repeater is a device which on receiving a signal retransmit it at a higher level so that the signal can cover more distance. So we are not going into much detail. You just know the main thing about this.
And then there is a gateway. Gateway means some passage or some channel through which your signal can get the access and pass, for the further, you can say, journey. So it is basically a passage between the networks, and it connects them in such a way that this connection will then work upon completely different networking protocols. If there are different networking protocols, then this gateway or this device get access to your signal. They primarily work as a middleman, you can say, that takes information from a system, then it translate it and transfer it to the some other system. Like you have a gate, a main gate through which there is entry of somebody from the outside of your house to inside of your house, and some limited person will get the entry, whom and that's why you close your door all the time and you open whenever you feel ki, yes, somebody is eligible to enter your house. And in between house there is again there are different rooms for different work or for different purpose. So again you are having a gate, a one room is connected to another. So like that, there is a gateway, that is a device which allows you, or you can say, it gives entry for a particular data to, the further, you can say, like a middleman that takes the information from one system and then it translate it and then it transfer it to some other system. So like that, it channelizes your, you can say, your data so that it can reach to the particular destination. तो गेटवे भी जो है एक तरह से आपके जो डेटा है उसको एक एक्सेस देता है दूसरे सिस्टम तक जाने के लिए, और ताकि जो है आपका जो जो भी डेटा आप ट्रांसफर करना चाहते हो किसी और डेस्टिनेशन पॉइंट पे, वो उसको रिसीव कर सके। तो इसके लिए ये इंफॉर्मेशन जो है वो लेता है पर्टिकुलर चैनल से, उसको ट्रांसलेट करता है, समझता है, और फिर अगेन उसको जो है ट्रांसफर कर देता है दूसरे सिस्टम पे। अब थोड़ा सा हम OSI मॉडल और जो है TCP/IP मॉडल के बारे में पढ़ लेते हैं। सो OSI मॉडल जो है ये पहले बनाया गया प्रोटोकॉल है, जो कि इसका जो फुल फॉर्म है वो है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन जो है वो ISO ने बनाया था, जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन है। तो इन्होंने कुछ प्रोटोकॉल बनाया। प्रोटोकॉल का मतलब होता है कुछ रूल्स और रेगुलेशन जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं पूरे सिस्टम को वर्ल्ड वाइड, तभी आपका एक जो सारे सिस्टम्स हैं, जो सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, या जो भी इंटरनेट जो आपके सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, वो और सभी लोगों को वो प्रोटोकॉल फॉलो करने पड़ते हैं, ताकि आपका जो डिवाइस या आपका जो डेटा है, आपका जो फाइल है, या आप जो भी चीज़ें एक्सेस करना चाहते हो इंटरनेशनली, वो आप एक्सेस कर सको, वो वहाँ से आप ले सको, और आपका डेटा यदि आप दूसरे को देना चाहते हो तो वो आप उसको दे सको। जैसे कि आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना है, तो उसके लिए आप उड़ के नहीं पहुंच सकते। उड़ना है तो आपको प्लेन चाहिए, उसका भी एक रूट है, उसका भी एक तरीका है जाने का। ट्रेन से जा रहे हो तो उसका भी एक प्रोटोकॉल है, कैसे सिग्नलिंग होगी, कैसे वो जाएगी, कहाँ पे रुकेगी, है ना, कैसे गेट खुलेंगे, कब आपको जाना उतरना है, कब आपको चढ़ना है, कौन सी सीट आपको अलॉट हुई है तो ही आपने बैठना है ना। उसका एक प्रोसीजर है कि आपको टिकट भी लेना पड़ेगा, उस टाइम पे आपको पहुंचना भी है, घर से वहां तक पहुंचने का एक सिस्टम है। उसी तरह से जैसे स्कूल में है, इंस्टीट्यूशन में, उसके रूल्स और रेगुलेशन आपको फॉलो करने पड़ते हैं, तो ही आप वहां रहते हो, अदरवाइज आप टर्मिनेट हो जाते हो या आपको अलाउ नहीं किया जाता है। उसी तरह से ये प्रोटोकॉल्स, ये रूल्स और रेगुलेशन जो है वो बनाए, और ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, जो कि हर चीज को स्टैंडर्डाइज करता है कि हाँ ये सही है या ये गलत नहीं है, और यदि वो अप्रूव करता है तो वो ठप्पा जो है वो कंपनीज अपने प्रोडक्ट पे लगाती हैं या उसको फॉलो करती हैं, और नहीं या ऑथेंटिकेशन है तो आपको वो देखना चाहिए, और वो चीज जो है स्टैंडर्ड नहीं मानी जाती है फिर।
तो उन्होंने ये ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन ये मॉडल बनाया और इसमें 7 लेयर बनाई, अलग अलग लेयर बनाई, उसका ये काम है, इसका ये काम है, इसका ये काम है, और इस तरह से जो है आपका डेटा एक जगह से दूसरी जगह सिस्टम के अंदर और सिस्टम से बाहर कैसे फ्लो होगा वो बताया. Now, this TCP/IP protocol, and there is another protocol which is earlier one, which is OSI model. OSI model is Open System Interconnection. These are the rules and regulations made by International Organization of Standardization, that is ISO. They made a particular system or a concept, to standardize and characterize the communication functions involved in a typical or different computing system, or you can say if they are using any telecommunication services. So for that, so in OSI model, they have partitioned the data flow from sender to receiver. They are partitioned into 7 layers. So a class of functionality is served by a lower level to the layers above it. It flows from the lower level to the layers above it. And in other words, you can say it comes to the intermediate layer. They not only serve the layer above it, there is you can say the middle layer is the interconnection between the layers above it and the layers below it. Let's see how the layers look like. तो हम देख लेते हैं कैसे दिखती हैं layers. So the first one is application layer, presentation layer, session layer, then transport layer, network layer, data link layer, and physical layer. Now from the sender to the receiver, the data flows like this, from up to down. How? Up to down. Application layer means application, presentation, and session layer. They are software layer. They are just the set of instructions, okay? And then transport layer, this is the heart of any model, transport layer, whether it is TCP/IP or OSI model. Now, software and hardware, they are, connected, or they communicate through this transport layer. And this network layer, data link layer, and physical layer, they are hardware layers. So when a sender sends a data, so it starts from application layer and it travels downward, like from application to presentation to session to transport to network to data link, and then through the physical layer, it is transmitted from your system. Now it is out from your system and it is in the a space, whether through a physical wire or through some radiations, and then it is received by the destination point through this lower level. Through the physical layer, it travels upward from down to up. The sender from up to down, and at the receiving end from down to up. Through the physical layer, it enters your system, then through data layer, network layer, transport layer, session layer, presentation layer, and through the application layer, it is now received by you or received by some receiver, and then the data is displayed on their devices. तो इस तरह से ये 7 लेयर्स हैं, इसके थ्रू जो है डेटा का फ्लो होता है. तो जब सेंडर के एंड से है तो डेटा जो है वो अपवर्ड टू डाउनलोड फ्लो होगा, और जब रिसीवर एंड में है तो लोअर टू अपवर्ड जाएगा. कैसे जाएगा? सेंडर से सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर, मतलब ये जो तीनों लेयर हैं ऊपर की, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ये सॉफ्टवेयर लेयर्स हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं इसमें, और बीच में है ट्रांसपोर्ट लेयर, और जो 3 लेयर है नेटवर्क, डेटा लिंक और फिजिकल, ये हार्डवेयर लेयर. तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में जो मिडिल टर्म है जो कनेक्ट करती है वो है ट्रांसपोर्ट लेयर. इसीलिए इसको कहते हैं हार्ट ऑफ द सिस्टम, हार्ट ऑफ द जो प्रोटोकॉल है उसका, दिस इज द हार्ट ऑफ OSI, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन. तो इसलिए एप्लीकेशन लेयर से आपका जो है डेटा जाता है, हमने पढ़ी थी जो सॉफ्टवेयर में उसमें पढ़ा था, ये सारे जो किस तरह से हम जो है इंस्ट्रक्शंस को देते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, और वो सारे सॉफ्टवेयर्स यहाँ पे काम आते हैं. तो एप्लीकेशन लेयर के थ्रू जो है आपका डेटा प्रेजेंटेशन लेयर में जाएगा, सेशन लेयर में जाएगा, वहां से फिर नेटवर्क लेयर में ट्रांसपोर्ट लेयर के थ्रू आएगा, फिर डेटा लिंक लेयर और फिर फिजिकल लेयर के थ्रू ये आपके सिस्टम से बाहर हो जाएगा.
ट्रांसफर के लिए। फिर बहुत सारे डिवाइसेस और जो हमने पेरिफेरल डिवाइसेस हैं या जो भी स्विचेस हैं, हब्स हैं, है ना, इसके थ्रू और थ्रू सम फिजिकल मीन्स एंड देन थ्रू सम रेडिएशन जो है ये आपके डेस्टिनेशन पॉइंट पे चला जाएगा, जिस पे को भी आपने ये डेटा ट्रांसफर किया है। फिर वहां पे डेटा कहाँ पे एंटर करेगा? फिजिकल लेयर से। फिजिकल लेयर से फिर डेटा लिंक पे, फिर नेटवर्क पे, फिर थ्रू द ट्रांसपोर्ट लेयर ये सेशन लेयर पे, प्रेजेंटेशन लेयर पे और एप्लीकेशन लेयर पे आएगा। और वहां पर जो है वो यूजर उसको देख सकता है कि आपने क्या भेजा है, किस फॉर्म में भेजा है, और वो उसको रिसीव कर लेता है। थोड़ा थोड़ा सा इस लेयर्स के बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो फिजिकल लेयर जो है ये जो है वो फिजिकल और इलेक्ट्रिकल, क्योंकि हम फिजिकल का मतलब है कि जो जो फिजिकली प्रेजेंट है, जिस जिस डिवाइस को या जिस चीजों को आप देख सकते हो, तो वो सारे स्पेसिफिकेशन है, डेटा कनेक्शन है, वो सारी चीजें इसमें आती है। और ये जो है रिलेशनशिप बनाता है ट्रांसमिशन मीडियम और जो डिवाइस के बीच में। और ये कुछ भी हो सकता है, एडाप्टर्स, रिपीटर्स, इथरनेट, जो केबल्स हमने पढ़ी वो। फिर डेटा लिंक लेयर जो है वो दो नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं जो है उसके बीच में कनेक्शन है, तो उसका एक अलग प्रोटोकॉल होगा, है ना। और ये जो प्रोटोकॉल्स हैं, ये जो लेयर्स हैं, दिस अलाउज इन डिफाइनिंग दोज प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंगली ही ये जो है वो आईपी एड्रेस को पहचानती है, और लॉजिकल एड्रेसिंग है या उसके अंदर क्या कहा गया है उसको आइडेंटिफाई करती है, एंड पॉइंट को समझती है। तो डेटा लिंक लेयर में ये सारी चीजें होती है। मीडिया एक्सेस कंट्रोल जो है वो होता है इसमें। और आपका जो ट्रांसमिशन है डेटा का, वो ये पॉसिबल बनाती है, क्योंकि ये लिंक स्टैब्लिश करती है फिजिकल और नेटवर्क लेयर के बीच में। तो जो भी लॉजिकल लिंक है, जो भी कंट्रोल्स हैं, वो इसके अंदर आते हैं। नेटवर्क लेयर जो है वो क्या है? ये प्रोसीजरल है, फंक्शनल जो है, जो नेटवर्क स्टैब्लिश करती है, जो डेटा सीक्वेंस को एक नोड से दूसरे नोड तक ले जाने के लिए जो भी डिफरेंट नेटवर्क्स हैं उसको, उसका जो प्रोटोकॉल है वो ये डिफाइन करती है। तो जो कहना चाहिए कि जो लेयर मैनेजमेंट प्रोटोकॉल्स हैं वो जो है इस मल्टीकास्ट ग्रुप मैनेजमेंट जो है वो इसका काम है, राउट करना सिग्नल को। उसका एक प्रोटोकॉल है, उसको वो थ्रू इस लेयर के थ्रू ही होता है, एड्रेस असाइनमेंट इस लेयर के थ्रू होता है। तो इस तरह से ये नेटवर्क लेयर का काम है। तो first we'll see these three layers. Physical layer means some physical connection between the different transmission mediums. So this layer, or you can say the protocol here, they involves the inter connections of hardware. So this involve network adapters or repeaters or cable or anything, whatever physical means involving in the network connections. And data link layer is basically, it establishes and terminates a connection of two devices that are connected. So protocols here maintained by the disk layer to connect the physical layer and transfer this data to the network layer. So this is a media access control, you can say, layer. And in certain networks, it is to access the medium and making the transmission of this data possible. This is the function of data link layer. And a layer of a link control also falls within this layer, and it identifies and encapsulates your protocols and find the errors also. If there is some error, it stop here, first amend that, and then it allows the data to flow from physical layer to network layer, because network layer is something which is connecting your data or make it to transfer to a certain network. So there are some procedural and functional means to transfer the data sequence from
a certain node or a certain computer to another connected, or through you can say another computer via different networks. So which network should be, should this data access for to from to transfer one point to another point, it is decided, or it is make it accessible by this layer, network layer. Now this is the there are some network layer management protocol which involves a multi group management. There are some routing protocols, some address assignment procedure. So all this happens in this network layer. Then there is a transport layer. So transport layer, basically it allows the transportation of your data, and what are the procedures. All those procedures and rules should be followed in a proper sequence, because it is you can say a main layer which communicates between the software and the hardware, you can say. So you can say data from the process on the source device to a process on the destination device. So there is a particular flow of transportation through some sequence or some syntax should be maintained. So the layer determines the quantity of data to be sent, how the data should be sent, where exactly to be sent, and what should be the rate of sending. So this layer provides acknowledgement of the successful data transmission. So this is a very important layer, transport layer. Now then there is a session layer. So session layer is responsible for controlling the dialogues between the two computers. Now the start and the termination of the connection are established between the local and the remote application. Some password validation, some log on are handled by this layer, session layer. The utility of the layer is to permit two systems to form or enter into dialogue when you communicate, or when you're in a conference, or when you are in a you can say a live connection between the two systems at remote places, that is established by certain protocols. So how, when to start, when to end this connection. So all these session layer, that's why it is called the session layer. It establishes a particular session between the two entities. Then there is a presentation layer. So this is referred to as a syntax layer, because it allows the transformation of data in a form that the application accepts, you can say, or handling the data encryption and data compression adds to the utility of this layer, how the data should be presented. So that's why it is in the form of which application it is accepted by the particular system. So all these things are taken care by this presentation layer. Then application layer is the highest layer, you can say, at the topmost layer, you can say. The interaction of the user with the different software applications is possible because of this layer, because whatever form you want from the computer, in whatever form you want to send the data, it all deals at this top layer, that is application layer, like email or file transfer or some text or audio or video, whatever application is needed by the user. It it is the responsibility of एप्लीकेशन लेयर. तो ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो क्या करता है, एक नेटवर्क बिल्ड करता है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में. तो ये लेयर जो है वो अलाउ करता है डेटा को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक पर्टिकुलर प्रोसेस और प्रोटोकॉल को फॉलो करके, कि आपका जो सोर्स डिवाइस है वो इस तरह से उसकी प्रोसेसिंग हो कि वो जो है वो डेस्टिनेशन डिवाइस तक वो डेटा को पहुंचा सके. तो ये जो लेयर है ये बताती है कि भाई कितना डेटा जो है वो सेंड होगा एक बार में, किस तरह से सेंड होगा, है ना. और जो रेट ऑफ सेंडिंग है, जो स्पीड है डेटा ट्रांसफर की, वो कितनी होगी, किस किस तरह से पैकेट्स को ये भेजेगा, और वहाँ डेस्टिनेशन पॉइंट पे वो सारे पैकेट्स एक साथ असेंबल होके और एप्लीकेशन लेयर तक वो पहुंचेंगे. तो ये एक तरह से एक्नॉलेजमेंट देता है सक्सेसफुल डेटा ट्रांसमिशन के लिए.
फिर सेशन लेयर जो है वो कोई भी दो के बीच में जब कनेक्शन बनता है तो उस कनेक्शन का स्टार्ट करना और टर्मिनेट करना, उसको ख़त्म करना, तो ये सारा जो कनेक्शन बनाने का स्टैब्लिश करने का जो है रिमोट या लोकल एप्लीकेशन के लिए वो सेशन लेयर का काम है। इसी में यही लेयर जो है वो पासवर्ड वैलिडेशन का काम, लॉग ऑन जब आप करते हो कोई भी सिस्टम पे या कहीं पे किसी साइट पे, चाहे वो बैंक की हो, रेलवेज की, जहाँ का भी आपने ले रखा है अपना लॉगिन पासवर्ड, तो उस सारी चीज़ों को, उस सेशन को ये जो है वो कहना चाहिए कि उसका टेक केयर करता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो एक तरह से आप ये कह सकते हो कि दो जो सिस्टम है उसके बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है, जो डायलॉग हो रहा है, उसके लिए ये जिम्मेदार है, इसलिए इसको कहा है सेशन लेयर, पर्टिकुलर सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। प्रेजेंटेशन लेयर जो है वो उसमें क्या होता है कि एक तरह से ये सिंटेक्स लेयर है, मतलब कि एक सीक्वेंस, एक प्रॉपर कहना चाहिए कि फ्लो में किस तरह से जो है आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा डेटा का, वो इसके लिए एप्लीकेशन लेयर तक, उसके लिए हाउ टू प्रेजेंट द डेटा टू द एप्लीकेशन लेयर। तो डेटा हैंडलिंग जो है उसका इंक्रिप्शन है या डेटा का कंप्रेशन है या फिर उसको डिकम्प्रेस करना है, ये सारी चीज़ें जो है इस लेयर की जो यूटिलिटी को वो बढ़ाती है। फिर एप्लीकेशन लेयर जो है टॉप मोस्ट लेयर है, सबसे हाईएस्ट लेयर है, और ये इंटरेक्शन जो है यूजर के बीच में और डिफरेंट सॉफ्टवेयर के जो बीच में जो कम्युनिकेशन है, इंटरेक्शन है, उसको पॉसिबल बनाती है। जैसे कि आपको ईमेल करना है तो वो एप्लीकेशन आप करोगे तो उसके लिए वो प्रोटोकॉल को फाइनल करेगी, इस प्रोटोकॉल के थ्रू आप ईमेल भेज सकते हो, या इसके थ्रू आप फाइल ट्रांसफर कर सकते हो, इसके थ्रू आप ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, किस भी फॉर्म में आप जो दे रहे हो, कौन सा एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, वो आप बता सकते हो। फिर एक है टीसीपी/आईपी। टीसीपी/आईपी जो है ये वर्ल्ड वाइड यूज होने वाला जो है कहना चाहिए प्रोटोकॉल है, विच अलाउज द क्लाइंट्स टू पहले हिंदी में देख लेते हैं। तो बहुत सारे मल्टीपल कंप्यूटर नेटवर्क्स हैं जो कि आपस में लिंक रहते हैं। वो लिंक किस तरह से रहते हैं, किस तरह से डेटा ट्रांसफर होता है, वो उसका प्रोटोकॉल है टीसीपी/आईपी। यही वर्ल्ड वाइड जो है वो यूज होता है, और एंड टू एंड आपको इनक्रिप्टेड डेटा ट्रांसफर करना है। कोई भी दूसरा डेटा आपके डेटा में मिक्स ना हो, या आपका डेटा कोई और ना चुरा ले, इसलिए बहुत सारे प्रोटोकॉल्स को सिक्योर बनाना, उसको उसी फॉर्म में डेस्टिनेशन पॉइंट तक पहुंचाना, बड़े सीक्वेंस से पहुंचाना। ऐसा नहीं है कोई फाइल आपने पूरी एक फाइल भेजी, पहले का आगे आ गया, आगे वाला पहले पीछे चला गया, ऐसा नहीं। सिस्टमेटिक वे में किस तरह से डाला जाए उसके लिए। अब इसमें जो है 4 लेयर होती हैं, हमने अभी पढ़ा ओएसआई मॉडल, उसमें 7 लेयर्स थी, टीसीपी/आईपी में 4 लेयर्स होती हैं। ऊपर की जो 3 लेयर्स हैं उसको इन्होंने एक कर दिया, और लास्ट की जो 2 हैं उनको एक कर दिया। तो इस तरह से 7 लेयर्स का 4 लेयर्स जो है वो बन गई। So TCP/IP again, as we have seen till now, it's a very important, very widely used protocol, and it allows the client to adopt a specific behavior to link a device with the internet. Now, in this layer, the multiple computer we all know in the internet, it is a worldwide network. So various, computers are functioning together. They are accessing the network together. So it assists a user in building a virtual network. A prime objective of this model is to allow long distance communication, and this stack is built primarily to provide an extremely stable end-to-end byte stream encrypted over insecure internet network. So through this protocol, the internet operates, and the fundamental language is this protocol. So in simple word, one machine to communicate over the internet to the another machine by assembling, some data packets and delivering them to a correct place.
So all this delivery of network, you can say packets, is done by using this protocol. Now, in this protocol, we have seen OSI model has 7 layers. Now, this protocol has 4 layers. Upper 3 layers, which were the, you can say, these 3 layers, application layer, presentation layer, and session layer. This combines to give a one layer, which is application layer. All right, all three software layers, they are merged into application layer. Then there is a transport layer, and then there is an internet layer, and the last 2 layers, last two, data link and physical layer, they are merged into network access layer. So that way it is having 4 layers. That is the difference. And we have not we should not go into much detail. What does it mean, what are the protocols and all? This is all a matter of engineering. You should know how the data flows at the sending end, and how the data will flow from one layer to another layer at the receiving end. These two things, a number of layer, the sequence of layer, that you should remember. All right. So from the at the receiving end, the data flow is same, upward to downward, from up to down, from application to transport to internet to network. And at the receiving end, it is from network to internet to transport, and then last one is application layer. So all the details are more or less same. So we are not going into much detail because we have seen it. Now, before starting, okay, time is about to over. Now, 2.2 main topics are remaining. That is number system and uh, ICT in education. So there are various portals of education which in using ICT. So that we'll see on Wednesday. Okay. Are you having time? 5 more minutes. I'll give just an introduction to the number system. Anyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So that will cover rest of the thing in one go, in one lecture, and then we'll do some question answer round. So number system, basically we follow in normal routine only one number system, that is a decimal number system. All right, we use words, we use numbers, we use characters to communicate with each other. And computers cannot understand this simple language, which is whether English or Hindi or any other direct language. Okay. So first, this data, whatever information you are having, it is converted to some, electronic signal when we say it's a data. And this pulse is, we call it code. And to translate this, code to some numeric format, there is a code which is ASCII code. This is alphanumeric code, and it creates a numerical value, that digits for each digit, symbol, or a character that a system understands. So numerical value of a digit is in a number can be, specifying by some number or the position of the digit in the number and the base of the system. So to understand computer language, or communicate with the system, one needs to know some of the you can say form of number system. तो जब हम नंबर सिस्टम के बारे में बात करते हैं, तो नंबर सिस्टम जो हम फॉलो करते हैं वो डेसिमल नंबर होता है, 0 to 9, 10 डिजिट्स. डेसी का मतलब होता है 10. तो 10 नंबर्स हम जनरली यूज करते हैं 0 से लेके 9 तक, और उसी के वेरियस कॉम्बिनेशन से पूरा का पूरा जो है काउंटिंग
हम चलाते हैं। लेकिन कंप्यूटर वो डेसिमल सिस्टम को नहीं समझता है। डिजिटल इसमें जो डिवाइसेस हैं वो स्विचेस हैं ऑन ऑफ वाले, तो वो या तो जीरो को समझेंगे या वन को समझेंगे, मतलब या तो सिग्नल है या तो सिग्नल नहीं है। तो उसके लिए कुछ कोडिंग की जाती है। उस कोडिंग के लिए बहुत सारे जो है नंबर सिस्टम हैं, पर जनरली हम बिट्स को फॉलो करते हैं, बाइनरी डिजिट्स को। तो बाइनरी डिजिट्स में क्या होता है, बाय का मतलब होता है दो, दो ही डिजिट्स यूज करते हैं, जीरो और वन। तो जीरो और वन मतलब दो डिजिट, तो इसका जो बेस है वो क्या होगा, दो होगा। डेसिमल नंबर का बेस क्या होता है, क्योंकि डेसी मतलब दस, दस नंबर यूज करते हैं 0 to 9 तक, तो जो बेस है वो होता है 10, यानी कि 10। So it is known as base 2 number system, and you can say it's a representation of electronic pulses. Electronic pulses, whether it is present or whether it is not present. So if there is no electronic pulse, then the digit is represented by 0. If there is an electronic pulse, then it is represented by 1. For example, if it is 0 raised to 2 raised to 0. 2 raised to 0 is, the last position in the binary number system, or the least significant bit, you can say. Uh, and you can say it is something, and this here it is written 2 multiplication. So this cross represents the last position. So it is 2 raised to 0, or any number. If it is powered by 0, that means it's the value is 1, whether it is 2, or you can say 3 or 4, or any number which is having a power 0, means the value is 1. बाइनरी नंबर्स में दो नंबर होते हैं, जीरो और वन। अब जीरो और वन के बहुत सारे कॉम्बिनेशंस में जो भी डाटा है वो ट्रांसफर होता है आपका। जीरो का मतलब है कोई भी सिग्नल है, यदि वो प्रेजेंट है तो वन से रिप्रेजेंट होगा, यदि वो प्रेजेंट नहीं है, सिग्नल नहीं है, तो वो जीरो से प्रेजेंट होगा। और अच्छे करेक्टली देख लेते हैं तो हम जो बेसिकली जो फॉलो होते हैं सिस्टम में, वो चार नंबर सिस्टम है, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। डेसिमल नंबर हम बहुत फेमिलियर हैं, 0 to 9 नंबर हम यूज करते हैं। बाइनरी जो कंप्यूटर है, जो फ्लिप फ्लॉप्स हैं, फ्लिप फ्लॉप का मतलब है कि या तो इधर या इधर, मतलब दो स्टेट है उसकी, तो जीरो या फिर वन। ऑक्टल नंबर जो है उसमें 8 नंबर होते हैं। 8 नंबर कहाँ तक होंगे, 0 to 7 तक। और हेक्साडेसिमल नंबर में 16 नंबर होते हैं। 0 to 9 तो जो है वो हमारे जो डिजिट्स हैं उनसे रिप्रेजेंट करते हैं, और बाकी के जो 6 नंबर बचते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं लेटर से, A B C D E F। ये चार कैपिटल लेटर्स हैं जिनसे कि आगे के चार नंबर, आगे के चार नंबर कौन से हुए, 0 to 9 तो हो गया हमारे जो नंबर्स हैं वो, मतलब 10 नंबर ये हो गए। उसके बाद कौन से होंगे, तो 10, 11, 12, 13 और 14 और 15, मतलब कि ये 6 डिजिट्स। और now decimal 0 to 9, 10 numbers, binary 0 to 1, 2 numbers, octal 0 to 7, 8 numbers, hexadecimal 0 to 9, that is our decimal numbers. And after 9, there are 6 more numbers which are represented by the capital letters of our alphabets, that is A, B, C, D, E, F. Now A, B, C, D, E, F represents 10, 11, 12, 13, 14 and 15. So hexadecimal number, how many numbers? 16 numbers, 15. 0 to 15, 16 numbers are the hexadecimal number, out of which 0 to 9 numbers, they are represented by numbers 0 to 9. And after that, 11 to 15, they are represented by capital letters A, B, C, D, E, F. Now, how to convert these numbers? So, these are having a special procedure that we'll see uh, in our next class. All right. So, till now, I think this is okay for now, for today. If you are having any doubt, you can ask